And right now, we go with the algorithm that is random forest algorithm. And before that, let's talk about yesterday's practical. I asked you people why accuracy is not coming out to be greater one. I mean, random forest is having 80%, but decision tree is getting somewhere around 74 or 76. SVM 78, logistic regression 76, decision tree 74, and linear regression might be a little bit less, and KNN will be was getting somewhere around 70 or 72. Why this accuracy is very minimal? It is not nearing 90% or 95% or 99%. Anyone? हमने अपने एल्गोरिथम को अच्छे से ट्रेन किया. We did so for our validation set also. We confirmed that also. Then again, we are getting the accuracy to be the minimal one. Why? बहुत इजी है. मैंने कुछ बोला था कि अपने डेटा को एक बार चेक कर लेना. मैंने एक्सेल शेयर किया हुआ है. काइंडली चेक आउट योर डेटा. कोई बताएगा मुझे? Yes, first years. Anyone would like to answer this question? Why? Yes, first year. Okay, let me ask. Okay, who is going to answer me? Okay, simple. Hanji, simple. Can you tell me, beta? Simple, are you there, beta? Okay, she left the meeting. Vandana? Yes, Vandana, can you please unmute your mic and just let me know the answer why exactly the accuracy is not coming out in the perfect manner? Ma'am, there might be any fault in missing data or Might be missing data. Okay, and just open the Excel sheet in your, if you are on your laptop or desktop, just open the Excel sheet. That's it. वहीं से identify हो जाएगा. Anyone? वो Excel sheet open हो रही है. Okay, fine. Anyone else? Nisha, can you answer better? To some extent, Vandana said कि missing data could be there. What else? Nisha. Try Nisha. कुछ गलत ही होगा कोई बात नहीं. Just answer. Nisha, your voice is not very clear. Okay, who else want to answer? Let it be the wrong answer. I don't have any issue in that. जल्दी जल्दी कौन बताएगा? Okay, let me check. Gauri, can you answer better? Yes, Gauri. Some correlation. Mansi, correlation in what sense? Like glucose or insulin correlated, hai Good point. One of the thing is correlation is there. Might be some of the columns. One example is, I guess Mansi ne ek example de diya hai. Otherwise, we can simply say that there might be some of the columns that are correlated. Anything else? Harshita, can you tell beta? Yes, Harshita. So it could have, the data set could have possible missing values. Correlation of the columns could be there. What else? As we just have almost 2 or 5 minutes to discuss about this. After that, I have to start with random forest. So please, बता दो मुझे. Harshita, can you answer beta? Okay, Juhi. Juhi बेटा आंसर कर सकते हो?
Your voice is not okay. Kanchan says seems like some of the data is wrong. How can so Kanchan, it couldn't be like the sum of the data could be wrong. How can someone have 13 pregnancies? Exactly, it could be not Ma'am, wrong, it is like, ma'am, misleading. we Yeah, have imbalanced set of samples. Like exactly. What we mean by imbalanced set of data set? it is inconsistent. Plus, some of the facts are not, you know, how to say Some of that. the Okay, so it is imbalanced data. I'll tell you what we mean by imbalanced data, but anything else. Kanchan, to some extent, you are right that the data might be wrong. Wrong. It could be because it is manually entered. It is not taken from the form of something. हमसे भी, I mean, human errors are there. Undoubtedly, yes, 13 pregnancies is in question mark, but might be. You can't say कि it is not. It could be not the possible case, but yes, it can be. So some of the data is not rightly or correctly mentioned. Okay, so missing values, correlation, imbalanced data, and your data entry is wrong. What else? सारी चीजें एक ही चीज में आ जाती है. मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगी और ऑटोमेटिकली सबको समझ में. सिर्फ डेटा सेट को देखो, डेटा सेट में अपनी जरा वैल्यूज को देखना शुरू करो. किसी भी एक कॉलम को उठाओ, उस कॉलम में देखो मिनिमल वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है. किसी ने चेक किया? Okay, let me check. Prerna, can you answer better this? ना प्राची अभी नहीं. प्रेरणा. Okay, Priyanshi Gupta. Yes, Priyanshi. हाँ प्रियांशी, क्या रीजन हो सकता है बेटा? Class, if you people are having your mic problem, please kindly leave the class. It's better not to attend the class. No matter when I'll ask you certain question, either you leave the class or your mic starts creating some issues. And when I'll ask, when I'll take your attendance, everybody's mic is working. It's better either you move out of the class or I'll remove you from my class. Okay, Riya Bhatnagar. Yes, Riya, are you there, beta? Yes, ma'am. हाँ बताओ बेटा, क्या रीजन है? I hope you had checked about your minimal value and the maximum value in the data set. Yes. Okay, कितना है? I don't want the actual value. I just want to know how much, how varied this data is. Yes, Riya? Ma'am, wait. The variation in the data set is large, more, very less. It is like it is starting from 1 and it is completing the values at 2, or it is having a very variation in the data, highly varied. Okay, Sampada, can you tell beta? Yes, Sampada. Yes, ma'am. हाँ बेटा, डेटा सेट हाईली वेरिएड है या लेस वेरिएड है? Highly. Highly varied है. Anyone else who is supporting Sampada's answer? It is highly varied. Okay, so can you answer beta? Yes, ma'am. Is the data set highly varied or Ma'am, less varied? प्रेगनेंसी वाला सिर्फ वो वाला कॉलम के लिए या फिर पूरा डेटा सेट? पूरा डेटा सेट, पूरा डेटा मैम सेट. पूरा डेटा सेट हाईली वैलिड नहीं है. Highly varied नहीं है. So it is starting from 1 and it is ending by a value of 2 or 3. That's it. Yes, ma'am. Anyone else? Ma'am, it's highly, तो highly varied का मतलब क्या होता है? Okay, मतलब- प्राची. हाँ वंदना. Ma'am, it's highly varied क्योंकि minimum is 0 and max value is 17.
अच्छा ओके सॉरी मैम मैंने प्रेगनेंसी वाला देखकर बता दिया It's कॉलम okay, it's okay, it's okay. कोई इसमें बात नहीं. 0 से स्टार्ट है और फिर 13 पे एंड है तो मुझे That's okay. That's 17 okay. है मैम. So the data set is highly varied. It is starting from some minus infinity value to some plus infinity value. You can check it out. It is some values are starting from 0 point something and ending with some positive value. Check कर लो. कोई भी एक value, कोई भी एक column उठा के देख लो. यस मैम 100 प्लस कुछ वैल्यूज में Exactly. दे रहा है कोई भी एक value उठा करके देख लो. Even for the decimal values, it is like 0.389. It is starting like this and it is ending by 11 point something. ऐसा कुछ करके आ रहा है. So if I start from this value till this value, the data set is highly varied. And हर column के लिए it is different. Getting my point? For example, pregnancies के लिए उन्होंने बोल दिया कि 0 से लेके 13 तक pregnancy दिखा रहा है. Now my data set is highly varied. So the accuracy is being incorporated. This is something called as imbalanced. या फिर हम इसे कह सकते हैं कि it is totally unbalanced data set. Why it is unbalanced data set? Because for certain columns might be it is going from -5 to let it be 3, but for some columns it is moving from 0 to almost 120, which is very much varied. To some extent it is moving from 0.28 to some let it be 11 point or 12.38 something. So it is unbalanced data. So there is not having all the values are not commonly correlated. तो जब भी हमारा अनबैलेंस डेटा सेट होता है जिसमें हम लोगों ने अभी तक ये आइडेंटिफाई भी नहीं किया आर देयर एनी नल वैल्यूज और नॉट. किसी ने ट्राई करके देखा था नल वैल्यूज हैं या नहीं है? If this data set contains null values or not, we didn't check it out. Okay, तो आप जब खुद करके देखोगे ना तो तुम्हें खुद आइडिया लगेगा कि yes null values exist करती हैं या नहीं करती हैं, और अगर कर रही हैं तो हम उसे किस एंगल से फिल इन करा सकते हैं. मीन से करा सकते हैं, मोड से करा सकते हैं, उसके मीडियन से करा सकते हैं. So unbalanced data set. So always understand one thing: accuracy is dependent on how well processed your data set is. In our case, the data set is not well processed. So there are two types of things जो कि हम लोगों ने मैंने तुम्हें बताया भी था. Something called as standard scalar and normalization. Okay. So basically normalization, in fact, sorry, this phenomenon is called as normalization. And there are two types of methods by which we can go for this normalization. Normalization का मतलब क्या हुआ? Over here, we just said that our data is highly varied because it is varying from minus infinity to plus infinity. What now? Minus infinity could be very negative value, plus infinity could be very positive value. We have to bring down our data set into some range जहां पर सारी values एक ही तरीके से काम कर रही हूँ, within that range ही हूँ. For example, if I say I'll change my all of the data set between 0 and 1, or I'll simply say that I'll create my data set in such a manner that there is some minimal value and some maximum value in the whole data set, and all the values are lying accordingly. So if I'll go with something called as this min-max scalar, my data will be from 0 to 1. If I am going with the standard scalar, then I have to make sure that my mu is equal to, which is mean is equal to 0 and sigma is equal to 1. Getting my point? So basically in this case, standard scalar, my values will be lying between -1 to 1. And for min-max scalar, it is lying between 0 and 1. So I didn't go for the normalization. So कहीं पर अगर वैल्यू 12.83 आ रही है तो वो 12.83 के लिए ही काम कर रहा है. लेकिन अगर मैंने इस पर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक लगाई होती तो डेफिनेटली इट विल बी नियर टू 0.99. तो और भी ऐसी वैल्यूज रही होंगी जो 0.99 के साथ रही होंगी, तो वहां पर बहुत इजीली जिस तरीके से कैलकुलेशन करी गई होंगी उसी तरीके से इस वाले पॉइंट पर भी कैलकुलेशन करा गया होगा. तो इजीली रिस्पॉन्स आ सकता है एंड एक्यूरेसी विल बी मोर. राइट नाउ द डेटा सेट इज हाईली वेरिड बिकॉज ऑफ अनबैलेंसिंग. So my accuracy is being penalized. Getting my point, class?
Last example to make this understand. Yes, you people are from 7 departments. Fine. There are students from different departments. That is 7 departments there are. That is computer science, management, finance, microbiome, food technology, stats, and maths. Fine. नाउ जस्ट थिंक ऑफ अगर ये भी सिर्फ 7 क्लास के स्टूडेंट्स 7 डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स की इतनी वेरिएशन है कि किसी को किसी चीज में अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को कुछ और समझ में आ रहा है, किसी को कोई चीज और पहले समझ में आ रही है, किसी को वो चीज लेट समझ में आ रही है. सो इट इज लाइक यू पीपल आर बिलोंगिंग टू वेरिड क्लास. Now it is like whenever I ask, there are only 7 to 8 students who will actually respond. Remaining other, मैं उनका नाम पूछती रहूंगी तो क्या होता है? Either they are totally on mute, or they will leave the class, or they will have their mic problem or something. Now what is happening? For whole of the class, if I define that for next 10 minutes, I'll be going to discuss this topic, it will lead to yes class. क्या होगा? अगर ये सारे कंस्ट्रेंट्स मेरे डेटा सेट में हैं, ये सारे कंस्ट्रेंट अगर तुम्हारे साथ हैं, अगर मैंने कहा कि 10 मिनट में मैंने ये टॉपिक खत्म करना है और अगर मैं क्वेश्चंस पूछ के बताया जा रही हूँ, अनडाउटेडली हाउ मच टाइम आई विल टेक? हाँ जी अक्षता, कैन यू टेल बेटा? नियति? यस मैम. हाँ बेटा. अक्षता कितना टाइम लूंगी मैं? मैम ज्यादा टाइम लगेगा. ज्यादा टाइम लगेगा. क्यों लगेगा ज्यादा टाइम? क्योंकि जो काम 10 मिनट में हो सकता था, अगर सब बेटर वे में आंसर कर सकते थे, कि उनको आता भी है पर वो जानबूझ के बोलते नहीं है, या दे डोंट इवन अटेंड द क्लास, देयर कुड बी एनी पॉसिबिलिटी. बट if they are not doing so if I want to finish something within 10 minutes, I will not be able to. So my accuracy is deviating, my accuracy is getting down. So highly varied data set, the accuracy is coming down. So we have to bring our data set into some range, within some range, so that the performance can be better. Now it is like, what I did, I simply ask those students who are actually dropping, when I'll ask something, or their mic is having problem, I simply ask them, kindly remove yourself from the class. उससे क्या हो जाएगा अक्षता? मैम उससे डेटा मतलब टाइम कम लगेगा, डेटा में ज्यादा. Exactly, I'll have only those data जो कि perfectly matching state में है. मतलब आप तुरंत क्वेश्चन पूछती है, तुरंत आंसर आ जाता है. Exactly, at least I have some answer no matter whether it is right or wrong. So if I'll have my data set जहां पर 30 students है, 30 में से अगर 10 बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रहे हैं, and my accuracy is deviating every now, then what I'll do, I'll simply try to say that these are the incompatible data points, and my machine learning will be fluctuating. It is not moving to local minima. So undoubtedly what I have to do, either I have to remove them or I have to fetch something should be added into that. अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर मुझे अपना परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर करना है, every day I should ask them certain questions so that at least they come out into a scenario जहां पर मैं कुछ पूछूंगी, at least they will respond, so that my time limit within 10 minutes ना होकर के 10 का 11 हो जाए या 12 हो जाए, that is okay, but my accuracy will start increasing. So this is what exactly we mean to say कि हमारी accuracy अभी कम क्यों है? Because we didn't identify whether there are null points or not. Secondly, the data is unbalanced. So if there is unbalancing, we didn't try to remove the unbalancing. There might be certain points that are actually moving towards plus infinity, but they are very limited values. Maybe there are only 2 or 3 values, so they are acting as an outlier. We have to remove them. वो हमने नहीं किया. उसके अलावा हम लोगों ने जो डेटा प्रोसेसिंग में था, जिसमें हो सकता है कि कुछ मिसिंग एरर्स हैं या फिर अनवांटेड डेटा पॉइंट्स है जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते एज पर आवर लॉजिक, हमने उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है. दैट्स द ओनली थिंग, मॉडल की एक्यूरेसी कम हो गई है. गेटिंग माय पॉइंट क्लास? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. So if somebody asks you that you people have to go for the accuracy of the model, then for accuracy of the model you have to do one thing. You have to first clean up your data. That's the only thing we simply say. It is a data processing technique. Until data is not well processed, we can't work on the unprocessed data. अगर आप unprocessed data पे काम करोगे, your accuracy will be less. And जो लोग 3rd या 4th के बाद आगे काम करेंगे डेटा साइंस पे, जिनका भी मन है, will see to it कि exactly accuracy कैसे increase हो रही है. Fine. So now let's go with something called as random forest. Okay. कोई सिर्फ इसका मतलब बता सकता है? What is random forest as per their understanding?
What? हाँ जी, anyone? अच्छा, नॉर्मल लेमैन की तरह मेरे को किसी को बताना, रैंडम फॉरेस्ट एक टेक्नोलॉजी है या एक टेक्निक है जिसे हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली आई विल टेल अबाउट रैंडम फॉरेस्ट। जो लिखा है वो लिखा है, इसके अलावा कहां जाना कहती है रैंडम फॉरेस्ट इज समथिंग, क्या? एनीवन? Okay. Decision tree. I hope everybody got to know what exactly decision tree is. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. If I'll say I have just one tree in a garden, so it is like just one tree or few trees in a garden. Can I say that? Exactly, Shalini. So if there are few trees, it is a garden or a park. If I'll say there is an area which is full of trees, then it is called as Forest. it is called as forest. Fine. So this is what exactly the differentiation between decision tree and random forest. So random forest is nothing but collection of more number of decision trees. So rather than working with one sort of decision tree, if I'll work with 5 decision tree at a time, I'll creating a random forest. Getting my point? Yes, ma'am. तो अगर मैं एक डिसीजन ट्री पे काम ना करके 5 डिसीजन ट्री पे काम कर रही हूँ एक साथ एक ही प्रॉब्लम के लिए, सो आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन रैंडम फॉरेस्ट. Random forest is none other than decision tree. It is working like a decision tree, but the only difference is rather than working with one decision tree, we have to define something in our algorithm that simply adds that it is a random forest. Now it is a collection of your trees for one algorithm. So random forest is a flexible, easy to use machine learning algorithm that produces even without hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning का मतलब क्या हुआ? जो हम लोग ब्रैकेट के अंदर किसी भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स पास ऑन करते हैं, अगर हम उनकी ट्यूनिंग का मतलब होता है इफ विल स्टार्ट चेंजिंग देयर वैल्यूज एंड जिस वैल्यू पे हमारी बेटर एक्यूरेसी आए वो वाली वैल्यू को हम कंसिडर करें. सो विदाउट दैट hyperparameter tuning, we actually work with random forest. It is also one of the most used algorithm because of its simplicity and diversity. That's the only reason that decision tree के बाद अगर Netflix या फिर Amazon Prime या फिर Facebook किसी algorithm पे काम करता है, that is random forest. So majorly Facebook, Amazon, your Netflix, it actually works on random forest. Okay? So what is random forest? A random forest is a supervised learning algorithm. The forest it builds is an ensemble of decision tree. So ensemble of decision tree means more of decision tree. Usually trained with the bagging method. I'll tell you what the bagging is. The general idea of the bagging method is that a combination of learning model increases the overall result. So it is like I have one decision tree, I'll add another decision tree for the same thing. Again, I'll add another decision tree. So now I have 3 different decision tree working for one algorithm, and now the accuracy will be combined. First algorithm, first decision tree का जो accuracy आया, second decision tree का जो accuracy आया, third decision tree का जो accuracy आया, if I'll combine, then the final accuracy will be what? The combination of all the 3 accuracies of the decision tree respectively. So this is something called as bagging. Clear हुआ class? यहाँ पर this is bagging. So random forest is nothing but it comes under supervised mode of learning. So Netflix, Amazon, your Facebook actually is a supervised mode of learning. There is something that is being defined to that particular thing. ये तुम check करके देख लेना. I don't know Facebook पे तुमने कभी ऐसा कुछ किया है या नहीं किया. Facebook पर अगर गलती से तुमने कोई एडवर्टीजमेंट चेक कर लिया, नेक्स्ट टाइम क्या होता है क्लास? हर जगह उसी का हर बार ऐसा ही कुछ होता है. So it is Yes, like you will check it out, जो कि पहले नहीं होता था. अगर तुम आज से 3-4 साल पहले की बात करो या ऑलमोस्ट 5 years बैक जाओ, ऐसा नहीं होता था. देयर आर हार्डली एडवर्टीजमेंट, एंड एडवर्टीजमेंट भी आपकी बिल्कुल राइट साइड पे स्क्रोल पे आता था.
अब it is like it is coming in between your posts. Even if you search, I don't know, everybody is having their Facebook on their mobile. Yes or no? मोबाइल फोन पर Yes, है ma'am. फेसबुक अकाउंट Yes, ma'am. एंड आजकल सबको पता है कि इफ वी आर वर्किंग विद एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स और एप्पल दे एक्चुअली आस्क फॉर आवर ईमेल आईडी टू एक्सेस. सो वी यूज टू ऐड आवर ईमेल आईडी. तो हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, कभी भी नोट करके देख लेना, अगर तुमने गूगल पे भी कोई एडवर्टीजमेंट सर्च करी है, तुम्हारा फेसबुक भी तुम्हें वो एडवर्टीजमेंट दिखाता है. क्या है कभी किसी ने चेक? Yes, ma'am. कोई कोर्स की चीज कर लो, कोई कॉस्मेटिक की चीज कर लो. आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. अगर नहीं है तो आप चेक भी करके देख लेना. गूगल पे कुछ सर्च करो एडवर्टीजमेंट्स एंड कुछ कंपोनेंट्स, यू विल डेफिनेटली फ्रॉम अनदर डे और इन अ डे और टू यू विल डेफिनेटली गेट सम ऑफ द नोटिफिकेशंस और सम ऑफ द एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू व्हाट एग्जैक्टली यू सर्च बिफोर. राइट? सो इट हैज टू बी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स. It shouldn't be like, okay, if I search something like who is the prime minister of Namibia, तो obvious है वो तुम्हें नहीं बताएगा. But in case of products, definitely it will work out. Why? Because a random forest is working on that. So how random forest works? The random forest is a supervised learning mode. ये तो हमने पढ़ी है. It is just like random forest builds multiple decision tree and merges them together to get a more accurate and stable prediction. So it is like, suppose I have in my class, I want to work with Niyati, Prachi, Surbhi and Akshita. Suppose. So now it is like, I'll give the same problem to all the 4 girls. And I'll ask them, okay, fine, Prachi, you work on this. Niyati will work on the same problem. Surbhi and Akshita will also work on the same problem. Now just let me know, will they work all together or they will start working individually? Yes, class? All together, ma'am. All together. So if I say, okay, tomorrow we'll meet for this particular problem, when we'll start discussing about it, so whatever they 4 had decided, only that point will be coming out for the discussion, or it will be like, might be Surbhi have some other perception and she'll start discussing on that. And it happens. Ma'am, first of all, we will individually solve it and then we will come to the conclusion. What is there? Agreed. But can it be, this is something that you are working in a group model, but at the same time, you all will be discussing, before discussing, you all will be reading your own stuff. Getting my point? Yes, ma'am. And then you will be adding whatever you got to understand, and then you will be adding to all of the, for all the 4 into the discussion and coming up with one solution. Getting my point? This is what exactly random forest does. For me, or for the model that is data science, random forest is having 4 trees now. Kon? Niyati, Surbhi, Akshita and Prachi. Now, Niyati will be working accordingly. उसको जितना समझ में आया, डिस्कशन बाद की बात है. इसीलिए क्या कहा जा रहा है, पहले इंडिविजुअल मोड पे चारों काम कर रहे हैं. After that, they are combining their conclusions. What exactly they gained. Now the accuracy will be exactly. होगा या नहीं होगा? अगर तुम्हारे को कहा जाए कि तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन 5 के ग्रुप्स में आएगा, तो क्या होगा? एक्यूरेसी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी. अब इसको बेटर वे में समझाने का एक और तरीका है, वो ये है कि अगर मैं एग्जाम में बोलती हूँ 5 स्टूडेंट्स इन 1 ग्रुप एंड दे विल बी गिविंग देयर रिटन एग्जामिनेशन, और सबको एक ही के भी, मतलब पूरे ग्रुप को एक ही मार्क्स मिलेंगे. इट इज नॉट लाइक कि सपोज प्राची डिड 12, तो प्राची को कम नंबर मिलेगा, बाकी सबको ज्यादा मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं है. तो इफ आई से प्राची की क्या इनपुट पूरे ग्रुप के लिए कम था, क्या ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी? हाँ जी मैम, ये बाकी मेंबर्स पे भी तो डिपेंड करता है ना. वी आर नॉट गोइंग विद दैट ना. इफ वी ऑल नो व्हाई वी वर्क इन ग्रुप. हमें ग्रुप पे काम करने की आदत क्यों है? हम ग्रुप में क्यों करना चाहते हैं सारे काम? ह्यूमन टेंडेंसी डिवाइड हो जाता है. व्हाट एल्स? अगर मैंने काम नहीं भी किया या मैंने काम कम भी किया, तो मेरी टीम पूरा कर देगी, कवर कर लेगी. सो दैट्स द ओनली रीजन. इसीलिए रैंडम फॉरेस्ट ने भी क्या कहा, उसने कहा ठीक है, अगर एक डिसीजन ट्री का आउटपुट कम आ भी रहा है, तो लास्ट में वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग मॉडल इंक्रीजेस द ओवरऑल रिजल्ट. इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्राची का स्कोर या इनपुट कम था भी, तो भी बाकी तीनों ने क्या करा,
ओवरऑल परफॉर्मेंस एनहांस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन तीनों ने उसके पार्ट को भी कवर करने की कोशिश करी है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रैंडम फॉरेस्ट डज। अब इसको अगर मैं नेटफ्लिक्स के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूं या अमेजोन के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूं, तो तुम खुद चेक करके देखो। तुम एक प्रोडक्ट की बात करते हो, प्रॉपर ब्रांड की बात करते हो, लेकिन वो तुम्हारे को कितने ब्रांड दिखाता है? उससे रिलेटेड सारे। उससे रिलेटेड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आई वांट टू बाय अ टी शर्ट इन येलो कलर। नाउ व्हाट विल हैपन? सारे वो कलर ब्रांड तक देखोगे जो ब्रांड तुमने सुना नहीं होगा। होता है या नहीं होता? यस मैम। Yes, ma'am. This is what exactly random forest does. वो तुम्हारे को all the possible, no matter whether you had heard about it or not. Now I'll say, okay, फलाना is फलाना either Amazon or Netflix या फिर मैं कहती हूँ Myntra is a very good app. ऐसा क्यों है? I hope सबको पता है Myntra is one of the best portal for the apparel buying, purchasing. We all know that. यस मैम। किसी ने अजियो से कभी कुछ परचेज करने की कोशिश की है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, who is very fond of Ajio and rather than Myntra? Okay, no one. So had anyone gone for Max की जो साइट है वहां से कुछ परचेज करने की कोशिश की है? No one. Okay, Pantaloon online. यस मैम। Okay. Yes, ma'am. So now which one is best? So I assume that everybody has gone for at least Myntra. Yes, ma'am. So why not Ajio? Why not something else? Because we know which one has having the better accuracy. क्यों? क्योंकि वहां पर the options are more. After that, something came out like Ajio. First one was the Myntra. After that, it is Ajio. Getting my point? So this is what exactly a random forest does. It is not working only for the one model. It is working for all the possible models, bringing out all the accuracy altogether for complete section, whatever we are asking, and finally presenting it out. This is more closer to human life. That's the only reason it is called as random forest, a supervised learning model. Learns from experience and increases the accuracy or the overall result by combining more number of decision trees. Okay, so one Ma'am, big it is like that you said. Pendulum Max would prefer offline rather than online because we know that Exactly. Myntra is Yes. better than. exactly. Suppose when we talk about Akash and all, we prefer offline, but when we talk about online, we go for Myntra to buy things because we know they are better and experienced in it. Exactly. This is what I need an answer. This is what is the proper understanding why we are going for these kind of machine learning algorithms. So, machine learning algorithm को life के साथ implicate किया जा रहा है because maybe in tomorrow's class I'll start with neural network. I'll give you a brief of neural network. You will get to know why everything is now supposed to be revolving around your life because जो भी कुछ आप मॉडल अब क्रिएट कर रहे हो that is related to your life. हम वहीं से एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, वहीं से लर्निंग करा रहे हैं, वहीं से टेस्टिंग करा रहे हैं. Now, one big advantage of random forest is that it can be used for both classification and regression problem, which form the majority of current machine learning algorithm. जो कि linear regression में it is a classification problem, logistic regression it is a classification problem, so SVM it is a regression problem but can work well for classification also. Decision tree individually for classification, individually for decision, and individually for both the combination. So random forest works both with one algorithm, with one model. So it is just like, let's look at the random forest in classification, since the classification is sometimes considered the building block of the machine learning. Yes, it is. So if you see, there are two different decision tree. And there is a summation over here. So I have one decision tree. So I'll simply say that it belongs to class 0. It belongs to class 1. And finally, I am combining यहाँ पर इसकी accuracy आई, यहाँ पर इसकी accuracy आई, and I'll finally combine it. I'll get a final accuracy of this. लेकिन जब तुम लोगों ने अपना कल की classification report में देखा था, तो I hope सबको याद होगा, class 0 is having higher accuracy, class 1 is having lower accuracy, and overall accuracy is coming out to be 77%. Remember? So this is what exactly is being done for the classification, I mean for the random forest. So क्या काम करता है? हर individual tree को train कराता है, हर individual tree को classification या फिर regression both the problems के लिए train कराता है, resultant लेकर आता है, उस resultant को combine करके दिखाता है. इसीलिए random tree की accuracy is higher.
check kar lena. It was coming out to be 80%. Now, random forest has nearly the same hyperparameter as a decision tree, or the bagging classifier, means the same thing. Fortunately, there is no need to combine a decision tree with a bagging classifier because you can easily use the classifier class for random forest. So basically, bagging is an algorithm. It is coming after random forest. Basically, hota kya hai? Decision tree is the main kind of thing. Decision tree ke baad now random forest is nothing but a assembler. So it is ensemble. So random forest comes under ensemble algorithm. Ensemble algorithm का मतलब क्या हुआ? Decision tree के कुछ structures हैं जिनको हम use कर रहे हैं, जिसके अंदर random forest आता है, bagging आता है, boosting आता है. Okay. So these are basically the ensemble model. They are working with decision tree. So algorithm में तुम कहीं नहीं देखोगे मैं specifically random forest बुला रही हूँ. मैं random forest को decision tree के साथ भी call कर सकती हूँ. So इसीलिए बोला जा रहा है कि it is not actually required that decision tree along with bagging is called as random forest. Just understand, decision tree along with bagging is random forest. So we are not required to call decision tree along with the bagging so that the random forest can be called out. क्योंकि हमने last class में किया है, हमने क्या करा, हमने सीधा random forest को call किया है. वहां पर जो random forest classifier हमने add किया है, that is having decision tree as well as the bagging. But if I'll use something else where I'll simply say it is an ensemble method, so I'll call ensemble. उसके अंदर decision tree दूंगी, bagging को add कराऊंगी, then it will be creating a random forest. With random forest, you can also deal with regression tasks by using the algorithm regressor. So both are the same thing. Again, I have the decision tree. It will be working on the regression model, and after that, each decision tree will be giving out their own accuracy, combining all the accuracy all together. Be getting the accuracy of the random forest class regressor rather than classifier. So this is something more important. Why the name random forest? It could be called as forest algorithm. Why random? So random forest adds an additional randomness to the model while growing the tree. Instead of searching for the most important feature while splitting a node, it searches for the best feature among a random subset of the features. इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताना चाहेगा मुझे? अभी हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था, वहां हम लोगों ने बोला कि there is something, there are correlations. Some columns are correlated. हम लोगों ने क्या सर्च करने की कोशिश करी? डिसीजन ट्री क्या करता था? गिनी फंक्शन निकालता, गिनी वैल्यू निकाल रहा था. वो क्या निकाल रहा था? सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है वो निकाल रहा था. बट यहाँ पर वो बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है वो निकालने की बजाय बेस्ट फीचर क्या है ये उस पर काम करता है. Who will tell me what exactly we mean by this? कोई एग्जाम्पल? बहुत आसान है. Think about it. वैसे प्राची ने थोड़ी देर पहले आंसर कर दिया है. हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? Anyone? Neha, will you try? Neha Rose. निशा? Okay, Neha, try करो बेटा एक बार. Okay, Nisha, can you tell beta? Yes. And the example? Any example if you want to add? It has to be some randomness. It is adding some randomness. And this question is for everyone, not only for Nisha or Neha. Jaya, are you there, beta? Yes, ma'am. Can you answer, beta? Quick example. Okay.
श्रेया ये बता सकते हो रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सारा डेटा सेट है उसमें कोई भी एक जनरली रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? यू जस्ट चेक आउट ऑन गूगल एंड रीड द स्टेटमेंट. Define random. Don't take it too long. I just have hardly 15 more minutes. What is random? Vitaka? Vitaka, are you there, beta? Vitaka, randomness का definition भी search करो. Nandini says not specific. Preksha, done without any method. Okay. Something which is unfamiliar. Unfamiliar is randomness or random? Random. Okay. What is randomness? So content says relating to having or being element or event with definite probability of occurrence. Okay. Shreya says Oddness. lacking a definite pattern. निशा फिर से बोलो बेटा. I'm lacking a definite pattern. Lacking a definite. Okay. Actual lack of pattern or predictability event. Unpredictable. Okay. So can anyone let me know कि उनकी लाइफ में randomness होती है या नहीं होती है हमारी लाइफ में? Oddness will be okay. Nandini is okay. Nandini right to some extent. Okay, who will tell me? Do we have randomness in our life or not? Are we random? Yes, ma'am, we have. Yes, ma'am. Why are we random? Why are we random? I mean, why this randomness is very much required in our life? And it is there. I'm telling you, randomness is there. Because we can't predict our future, so we just go with present. Okay, we can't predict our future, but at least we generalize it. If I'll do this, I can get this. अब वो prediction confirmation कब होगी? जब वो होगा. We can simply say we can assume something. This assumption, that is what we actually do. Okay, अगर मैं ये करती हूँ तो ये हो जाएगा. या मुझे वहां जाना है. It is now randomness. जाना है, मैं गई नहीं हूँ. Yeah, I want to take a 2-day break. I want to take it. I don't know whether I'll take it or not. This is my will that I want to take 2-day break. Getting my point? So, is there any example that actually helps random forest to work on? Because now random forest simply says that it adds some randomness in the algorithm. That is, it is instead of just who will speak out? Ma'am, like, ma'am, Richa. Richa. Ma'am, like, we have a mail. Without the randomness, we have a classify into spam or not spam. If we apply randomness, so we classify into banking, healthcare, in this email, like product related to product. तो रिचा का एग्जांपल समझ में आया सबको? No, ma'am. मुझे नहीं आया. Okay, रिचा फिर से. हम She is giving an example of spam. हाँ. हमारे पास एक ईमेल आया, तो अगर हम बिना रैंडमनेस के अगर उसको देखें तो फिर वो हम ये मान सकते हैं कि वो स्पैम है या फिर नॉन स्पैम है. अगर हम रैंडमनेस के साथ देखें तो रैंडमनेस उसे कैसे क्लासिफाइड करेगा, या फिर वो हेल्थ केयर से है, या फिर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या फिर किसी बैंकिंग से है, या फिर किसी इंडस्ट्रियल से आया है. तो ऐसे मतलब बेस्ट फीचर पे उसे क्लासिफाई कर दिया. एग्जैक्टली. अब क्लियर हुआ क्लास? अब कोलेट कर पा रहे हो? तो रिचा का एग्जांपल सिर्फ इतना है कि अगर सपोज हमारे पास एक मेल आया है एंड आई विल से दैट इज अ स्पैम मेल. नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज जनरलाइज्ड. अब अगर मैं उसकी रैंडमनेस की बात करूं तो वो जो स्पैम मेल है वो स्पैम मेल कहीं से भी हो सकता है. उसकी क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्डर में हो सकती है. जैसे कि इट कैन बी अ स्पैम मेल बीइंग सेंट बाय सम बैंक. इट कुड बी लाइक कि मैंने कोई साइट विजिट करी थी, वहां से कोई एक मेल आ गया हो, बिकॉज माई गूगल आईडी इज ऑलवेज एक्टिव ऑन माई मोबाइल फोन. It could be some healthcare option.
if you want to, जैसे 1 mg का I guess आज की डेट में बहुत सारी मेल्स आती हैं 1 mg chemist, fine. If I buy something from Apollo, तो definitely Apollo का जो regularly उनके products होंगे, नए आ रहे होंगे, new launches होंगे, वो उसके लिए mail भेज देंगे. So this is something coming under the category of spam, but with some classification. Now it is a randomness. It can be anything. Randomness का मतलब मुझे नहीं पता बैंक मेरे को भेजेगा या नहीं भेजेगा कोई spam mail, but आ रहा है. Second example, कोई और देना चाहता है? Anyone? Okay, let's talk about this first. तो यहां तक तो सबको क्लियर हुआ ना कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बजाय बेस्ट फीचर पे काम करता है. अभी के लिए इतना समझ में आया है? I'll give you an example about this. लेकिन थोड़ी देर के बाद. यहां तक क्लियर है क्लास? अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, रैंडमनेस ऐड करता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ट्रीज को ग्रो करता है, ट्री की स्प्रेडिंग होती है, डेप्थ को ग्रो करता है बाय not considering the important feature but best feature. Therefore, in random forest, only a random subset of feature is taken into consideration by the algorithm for splitting a node. You can even make a tree more random by additionally using random threshold for each feature rather than searching for the best possible threshold. Now, let's think about certain directions or some examples. Andrew wants to decide where to go during 1 year vacation. So he asked the people who know him best for suggestions. The first friend he seek out ask him about the likes and dislikes of his past travel. Based on the answers, he will give Andrew some advices. ये example समझ में आया? सिर्फ ये statement समझ में आई है कि क्या कहना चाह रहा है? Yes, ma'am. So this is a typical decision tree algorithm approach. Now this is a decision. ये क्या कर रहा है? अब ये जितने लोगों को जानता है, जो कि एंड्रयू को लगता है कि these are my group of friends and they will give me the best. They will give me the advice where I should go for an year break. Okay, now this is the decision tree algorithm. Andrew's friend created rules to guide his decision about what he should recommend by using Andrew's answer. So it will be giving a question, giving an answer, then according to the answer, another question, then answer, then according to the answer, then another question. So यहाँ पर every now and then there is a condition. If it is falling into that, an answer, again there is a condition, falling into that, again a condition. This is what is happening. Afterwards, Andrew start asking more and more of his friends to advise him, and they ask him different questions they can use to derive some recommendation. Finally, Andrew chooses the place that where the recommendation is more for that particular destination. So this is something called ये वाला जो point है. This is basically called as random forest. Now let's talk about it. Class personally मत लेना. I hope सबको आंसर पता ही है. सबसे ज्यादा आंसर क्लास में कौन करता है डेटा साइंस से रिलेटेड? मैं पूछती हूँ तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा आंसर कौन करता है? नियति. ओनली नियति? सुरभि, प्राची. Okay. So why नियति? वंदना also. Okay. Okay, why नियति, why सुरभि, why वंदना? Anyone? उन्होंने नाम दिए खासतौर पे नंदिनी, प्रियांशी. We are just playing the game, so just let me know the answer. That's it. नियति को बुरा नहीं लगेगा और सुरभि को भी बुरा नहीं लगेगा. कौन बताएगा? अच्छा रिया, can you tell बेटा why नियति? Because वो पूरा सुनती है तो उसको आता है तो इसलिए ये तुझे कैसे बताया कि वो पूरा सुनती है? पर ऑफ टाइम क्यों आंसर है. उसके आंसर देने से पता चलता है. So class, just understand, when I was asking you, okay, who is responding more? You people said Niyati, Surbhi, Vandana. Then I again asked you something. Why Niyati? Why Surbhi? Why Vandana? Now I'm not deciding that Niyati, Surbhi and Vandana are actually responding more. I'm not deciding that.
I just asked you something. Now I am moving towards the solution. So I again raised a question, why Niyati? तो रिया ने एक आंसर दे दिया. रिया ने जब आंसर दिया तो I instantly ask another condition. How are you aware of whether she listens everything very carefully or not? So she said, she gave an answer कि उसके आंसर से पता चलता है. And the next question is, okay, do you हर बार क्या उसका आंसर सही होता है? So again Riya will say, to some extent yes, major number of times. So this is what we are doing. We are moving towards a solution. So this is what exactly the decision tree does. अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को इसको कहाँ पर रोकना है. अब अगर मुझे लगता है कि जितना मैंने पूछा, रिया ने बोला कि हाँ उसके आंसर से पता चलता है, मैंने वही ब्रेक लगा दिया. This is decision tree. Now random forest क्या काम करेगा? Random forest अब ये नहीं देखेगा नियति है या सुरभि है या वंदना है. Okay. Now it will be asking certain more different questions in such a manner that whosoever answers, so that maximum or the best choice can come out. Now it is like, okay, Niyati, Surbhi and Vandana, how many people are in favor that Niyati actually answers a lot? Who will give the answer? Okay, raise your hand. Who are actually saying that Niyati answers a lot? What about Surbhi? Okay, what about Vandana? Okay, so now the clear picture simply says that Niyati answers a lot. Now this is the best feature. This is how I decided. This is how your algorithm will decide. Getting my point? Clear हुआ? Yes, ma'am. Last example. लोग reviews पढ़ते हो? Yes, ma'am. कोई भी आइटम अगर तुम ऑनलाइन परचेज करते हो तो रिव्यूज पढ़ते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिव्यूज पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग में कुछ विजुअलाइजेशन बनता है कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या सीधा कहते नहीं नहीं किसी ने कुछ भी लिखा हमें तो लेना है? नहीं, रिव्यूज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं फर्क कि पड़ता है. कि नहीं. ओके वंदना, एक और बात बता. आई होप don't take it personal, but I personally feel you use cosmetics. Yeah. Okay. So which brand you actually takes? Lakme, Maybelline, Ellie और कौन से हैं? और भी बहुत सारे products हैं. Which one you favors? Lakme. Why Lakme? उसके I have used the products, so I know कि मतलब they are. Okay. Will you Nice. recommend Lakme to Nisha? Yeah. Yes. Okay, Nisha. Yes, ma'am. कौन से products use करते हो? कौन से brand के use करते हो? I don't use, but Maybelline. Maybelline. Okay, fine. Now Vandana is actually recommending. Now if Surbhi asks कि fine यार मुझे कुछ cosmetic खरीदना है, let me know कि कौन सा खरीदूं. Okay. Surbhi, will you go buy Lakme or Maybelline? मैम उसके रिव्यूज चेक करूंगी क्योंकि आई You बी have बाइंग these two people. You just have these two people, Vandana and Nisha, very close to you. They know everything about you, and only you just know that दोनों की option matter करेगी. Now what will you do? मैं किसी थर्ड पर्सन से पूछूंगी नहीं है वो option. तो लैक में ले लूंगी. ऐसे कैसे? Think. This is what actually random forest does. What will Vandana do? Lakme के लिए convince करने के लिए. Ma'am, she's herself a user. She herself is a user. Then what? She knows Surbhi a lot. So it is a supervised mode of learning. So she know what exactly Surbhi की skin type क्या है, Surbhi को का texture क्या है, Surbhi को क्या चीज ज्यादा पसंद है, उसके according वो बता सकती है कि okay buy Lakme. Same thing happens with Nisha also. Now they will create such a model for themselves कि okay why Surbhi should go for Lakme and why Surbhi should go for Maybelline. This is what exactly random forest will do. Finally अगर Surbhi Maybelline product उठा लेती है, इसका मतलब क्या हुआ? The best feature is Maybelline. Despite the fact most important features were Maybelline as well as Lakme. Getting my point?
सीजन ट्री, लैक्मे और मेबेलिन दोनों पे काम करेगा, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट क्या काम करेगा, उसके सबसेट पे काम करेगा। जैसे उसे पता चलेगा ओके नाउ मेबेलिन इज कमिंग इनटू पिक्चर, सो इट विल बी वर्किंग मेजरली ऑन मेबेलिन रादर देन लैक्मे। यही काम तुम भी करते हो। ओके लैक्मे इज देयर, ओके लैक्मे मेबेलिन की काजल्स आर वेरी गुड, सो अनडाउटेडली विल गो फॉर वन ऑप्शन दैट इज स्मज प्रूफ होना चाहिए, सो लैक्मे इज गिविंग दैट। तो क्या करोगे, आज से पहले मैं मेबेलिन यूज करती थी, लेकिन नाउ आई एम मूविंग टू लैक्मे आफ्टर रीडिंग द रिव्यूज, आई गॉट टू नो दैट इट इज स्मज, it is waterproof. Now I will not go and check out okay Maybelline के reviewers क्या कह रहे हैं, getting my point। मैं कहाँ सर्च करना शुरू करूंगी, सिर्फ लैक्मे के बारे में जानने की कोशिश करूंगी। This is what Random Forest is doing। Clear हुआ class? Yes, ma'am. Okay, Yes. so last is feature importance that we will do tomorrow, बहुत छोटा सा है, and difference between decision tree and random forest I'm not going for that। मैंने तुम्हें भेजा हुआ है, you will simply get to know now the major difference is decision tree important feature पे काम करता है, major difference जो है, and random forest किस पे काम करता है, अभी बोला है, decision best feature पे काम, Best feature.